So hello everyone. At this class I am going to discuss about the objective part of complex number. ठीक है. So जो MCQ based questions होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए जाएंगे. So since today is the first objective class, today I am going to discuss the basic objective questions. ऐसा basic मतलब sometimes those type of questions also are coming in JEE mains. ठीक है. So little bit basic questions we will discuss, right? So the first question is the value of 1 plus I whole thing to the power 2011 divided by 1 minus I to the power 2009 is equal to what? The options are given. The options are -1, 1, 2 and -2. So this is the first question. You are asked to find out the value of 1 plus I whole thing to the power 2011 divided by 1 minus I to the power 2009. तो यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि I स्क्वायर का वैल्यू, I क्यूब का वैल्यू, I to the power 4 का वैल्यू. If you know the values of I square, I cube and I power 4, we can easily solve this question. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को देखो, 2011 है न्यूमरेटर में और 2009 है डिनोमिनेटर में. तो since the numerator part is greater than the denominator in terms of their exponent, so then it can be written as 1 plus I whole thing to the power 2009 divided by 1 minus I whole thing to the power 2009 into 1 plus I whole square also we can write. एक्सपोनेंट को सेम कर दिया ताकि हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई होल थिंग टू द पावर 2009 इंटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर. ऑलराइट. नाउ look at the term here, 1 plus I by 1 minus I. तो मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्जेक्टिव डिस्कस किया था, जब कॉन्सेप्ट दिया था, then at that time I discussed that if imaginary term is there in the denominator, if there is any imaginary term there in the denominator, then we have to rationalize it to make it real. डिनोमिनेटर में अगर इमेजिनरी टर्म रहेगा तो उसको रेशनलाइज करके रियल में कन्वर्ट करना है. ठीक है. ओनली डिनोमिनेटर को. सो सिंस हियर इमेजिनरी टर्म इज देयर, सो रेशनलाइज इट. 1 प्लस आई into 1 plus I, that is 1 plus I whole square divided by 1 minus I into 1 plus I whole thing to the power 2009. Alright. Into 1 plus I whole square. If I expand this one, this will be 1 plus twice I minus 1, because the value of I square we all know that is -1. Okay. So from here we can cancel. That is, if I expand the numerator now, no need to cancel. If I expand the numerator, then see what will happen. 1 plus twice I minus 1 divided by whatever the denominator, 1 minus I into 1 plus I. It can be written as 1 square minus I square whole thing to the power 2009 into, यहाँ पे -1 plus 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर रहेगा twice I. So this is equal to -1 plus 1 cancel twice I. What about the denominator now? The value of I square we all know that is -1, minus it will become plus. So twice I by 2, that is equal to I only. So I to the power 2009 into twice I. Yes, I to the power 2009 into twice I, that is 2 into I to the power 2010, because I to the power 9 into I to the power 1 is I to the power 2010. Alright. So 2 into, now this is even number. Look at the exponent. 2010 is even. So since it is even, so divide this number by 2. So I square to the power 10. If you divide this one by 2, 1005. Okay, so 1005. So I square, the value of I square we all know that is -1. -1 to the power odd number, that is -1 only.
-1 into 2, this is equal to -2. This is the करेक्ट आंसर. सो -2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आएगा बोल के कोई बात नहीं. ऐसा मॉडल का नाउ सिंस द करंट ईयर इज 2021, तो यहाँ पे दे सकता है 2021 by 2019. Yes, so if you know the procedure how to proceed, then you can solve any exponent, not only 2011 and 2009, 2021 by 2019 जो करंट ईयर है उसके हिसाब से भी दे सकता है क्वेश्चन. तो अरेंज करना है कैसे, प्रोसीड कैसे करना है, वो सिर्फ याद रखना है कैसे मतलब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, so this is the first model, the basic model only you can say. Okay, this is the basic model, first model. Let us discuss the next question. The next question is थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में मैं चला जाता हूँ. If 6i minus 3i 1 4 3i minus 1 then 20 3 and I, this is equal to x plus iy. Look at the question, it is in the form of a determinant. 6i minus 3i 1 4 3i minus 1 23 and I, this is equal to x plus iy. Then find out the values of x and y, then determine the values of x and y. So here the options are given. The first option is x equal to 0, y equal to 0. Second option, x equal to 1, y is equal to 2. Third option, x equal to 3, y is equal to 2. And the fourth option is x equal to minus 1, y is equal to minus 3. So these are the options given. Okay, so look at the question. Already I have given the basic concept of determinant. डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट है तो इसको हमेशा पहले एक्सपांड करना है, बट एक्सपांड करने का भी तरीका होगा. बिकॉज राइट हैंड साइड में देखो, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. वी ऑल नो दैट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय x plus iy. So it is in the form of x plus iy. That means you have to expand the left hand side in such a way that the expression must be in the form of x plus iy, so that we can equate the term. All right, so let us expand the left hand side. The first element of the left hand side is 6i. So write here 6i, then delete the position of 6i. 3i into I, there is 3i square, which is minus 3 plus 3. Why it is plus 3? Because 3 into minus 1 is minus 3, but minus it will become plus. तो बीच में हमेशा माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस ऑफ माइनस इट विल बिकम प्लस 3i. नाउ डिलीट द पोजीशन 4 into I, that is 4i minus plus 20 plus 1 into, now delete the position of 1, 4 3s are 12 minus 60i, which is equal to x plus iy. So expand करने के बाद ये मिला. So minus 3 plus 3 will become 0. So first term will be 0. So let us expand the second term. It will be minus 12 plus 60i minus 12 plus 60i plus 12 minus 60i, which is equal to x plus iy. Look at the left hand side. Minus 60i plus 60i will be cancelled. Plus 12 minus 12 will be cancelled. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं बचा. That is 0 only. तो मैं क्या बोला था? You have to expand the determinant in such a way that the expression must be in the form of x plus iy, so that we can equate the real and imaginary part. We all know that x is the real. In a complex number, x is the real part, whereas y is the imaginary part. So since on left hand side we got 0, so this 0 can be expressed by 0 plus I into 0, which is equal to x plus iy. Now if I equate this one, we will get x equal to 0 as well as y equal to 0. Real part 0, imaginary part is also 0. So first option is the correct answer. ठीक है, these are basic questions. Okay, so लेकिन एक्सप्रेस कैसे करना है वो सब छोटा मोटा ट्रिक्स याद रखना है. तो जब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब ये सब ट्रिक्स यूज होगा. सो दैट इज
That is why I am discussing first the basics of the complex part, objective part. Okay, so this is question number 2. Let us discuss the next question. The next question is, if 2 plus 3i, if 2 plus 3i divided by 7 minus i into 4 plus twice I, this is equal to a plus ib. This is equal to a plus ib. Then find out the value of a square plus b square. Find the value of a square plus b square. The options are given: 13 by 100, 13 by 1000, then 17 by 100 and 17 by 1000. So these are the options given. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. Look at the question. If 2 plus 3i divided by 7 minus i into 4 plus twice I is equal to a plus ib. Forget about the left hand side. Just you look at the right hand side part. A plus ib is given, which is a complex number. We know that complex number is can be expressed by x plus iy. तो यहाँ पे a plus ib है instead of x plus iy. So राइट हैंड साइड को क्यों देखना है? बिकॉज जो एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एंड ए एंड बी आर देयर ऑन राइट हैंड साइड ओनली. सो लुक एट द टर्म एक्सप्रेशन व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे है a प्लस आई बी. सो a प्लस आई बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, सब्जेक्टिव में डिस्कस किए हम लोग. सो फ्रॉम a प्लस आई बी हाउ कैन वी फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? There is one property. We all know that modulus z is equal to, what is the value of modulus z? Root over a square plus b square. That is, if z is equal to x plus iy, listen, if z is equal to x plus iy, then modulus of z is equal to root over x square plus y square. So modulus z square, which is equal to x square plus y square, we can write. Yes, so modulus z square equal to x square plus y square. That means x square plus y square तभी मिलेगा हम लोगों को when we take the conjugate, like x plus iy is given. If you multiply x minus iy with x plus iy, then only you will get x square plus y square. Okay, then only will get x square plus y square. ये बात सब्जेक्टिव में बताया गया था, राइट? सो सिंस हियर a plus ib is given, so take the conjugate of a plus ib. That is, the conjugate of a plus ib is a minus ib. Yes, so if we multiply a plus ib and a minus ib, then only you will get a square minus a plus b square. So if we take the conjugate of the right hand side, then you must take the conjugate of the left hand side also. Okay, if you take the conjugate of the right hand side, then you must take the conjugate of the left hand side part also. So ये conjugate लेने से बेहतर है कि since we are doing the objective questions, so conjugate लेने से बेहतर है कि we take modulus on both sides. That is the shortcut. So take modulus on both sides. Modulus of 2 plus I divided by 7 minus I into 4 plus twice I. This is equal to modulus of a plus ib. Okay, so we all know that whole modulus z1 by z2 can be written as modulus z1 divided by modulus of z2. So it is also in the form of modulus z1 into z2. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं modulus 2 plus 3i divided by 7 minus I into 4 plus 2i can be written as modulus 7 minus I into modulus 4 plus twice I. This is equal to modulus of a plus ib. Modulus of a plus ib is nothing but a square plus b square. और पहले नहीं तो हम लोग यहाँ पे modulus of a plus ib लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे. ऑलराइट, अभी क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सिंपली देखो, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू ही तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और हम लोगों को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही चाहिए, नॉट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन व्हाट वी हैव टू डू?
squaring on both side, then we can write modulus z square. Modulus z square क्या होगा? That is x square plus y square. So it will be then 2 square minus, actually here why I have given plus sign, because minus I square, the value of I square is minus 1. Okay, so 2 square 3I whole square divided by 7 minus I, 7 square minus I square into 4 square minus 2I whole square. This is equal to a plus ib whole square, can be written as now a square plus b square. So it is 2 square, sorry this is plus, okay, so 2 square 3I whole square. The value of I square we all know, that is minus 1. The value of I square is minus 1, so minus 9. So 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 3 plus 4 plus 9, sorry 4 and 3 square, that is 9. 4 plus 9, that is equal to 13. A square minus b square form में आएगा. So the value of I square is minus 1. So minus minus it will become plus. So that is, it is 13. 7 plus it will be not plus, it is minus only. So minus होगा. A square minus b square. I square का value है minus 1. So 14, 49 plus 1, that is 50 into the value of 2 square, that is 4 plus I होगा, तो फिर ये हो जाएगा 16. 4 square that is 16 plus 4, that is 20. This is equal to a square plus b square. So a square plus b square is equal to 13 by 1000. So a square plus b square equal to 13 by 1000. So second option is the correct answer. This is the shortcut actually. जो प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस किया, वही प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया गया. एक्चुअली यू कैन टेक कॉन्जुगेट ऑल्सो. कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि मॉडुलस लेने से ही अच्छा, क्योंकि मॉडुलस लेने से थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा. अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2 को, फिर एक्सपांड करना है. सो इट विल टेक मोर टाइम. Since we are solving objective questions, so we have to think about the shortcut only. So that is why ये बात याद रखना है. Since if a plus ib will be given in the question and you are asked to find a square plus b square, then just you take modulus on both sides. And after taking modulus, in the next step, don't forget to square. Square करना पड़ेगा, because modulus of z square का value ही x square plus y square है. लेकिन मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. लेकिन हम लोगों को तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना है. वी नीड टू फाइंड आउट ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दैट इज व्हाई आफ्टर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड मॉडल. फ्यू मोर मॉडल्स आई विल डिस्कस नाउ. So take a look at the next question. The next question, if z equal to x minus iy and z to the power 1 by 3 is equal to p plus iq. If z equal to x minus iy and z to the power 1 by 3 is equal to p plus iq, then find the value of x by p plus y by q divided by p square plus q square. ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू चलो x माइनस आई वाई दिया गया है, और सेकेंड जो कंडीशन दिया गया है दैट इज z टू द पावर 1 by 3 इक्वल टू p plus iq. So since z to the power 1 by 3 is equal to p plus iq, cubing on both sides, then we can write z equal to p plus iq whole cube. Yes. So now substitute the value of z, which is given x minus iy, and then expand the right hand side by applying a plus b whole cube formula. A cube plus 3a square into b plus 3a into b square plus b cube. This is a plus b whole cube. So after expansion, then you separate the real and imaginary part, that is p cube plus I into 3p square cube. The value of I square is minus 1, so it will become then minus 3pq square. The value of I cube is minus I, that is become minus iq cube.
So p cube minus 3pq square. This is the real part. And then plus I into 3p square q minus q cube. ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. सो x माइनस आई वाई का वैल्यू हम लोगों को ये मिल गया. नाउ equate the real and imaginary part. So x equal to, if I equate the real and imaginary part, we'll get x equal to p cube minus 3pq square, whereas minus y is equal to, why I am writing here minus 1, because here minus is there and here plus is there, so that is why minus y is equal to 3p square q minus q cube. Take minus common from right hand side, then it will become y is equal to q cube minus 3p square q. Alright, so we know the values of p and q. चलो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, look at the expression properly. X by p, look at the numerator only. X by p plus y by q is there. So we know the value of x. From here, if I take p common, then we can write it as x by p is equal to p square minus 3q square. Similarly, from the second equation, if I take a q common, this can be written as y by q is equal to q square minus 3p square. Okay, so now we know the values of x by p and y by q. Why we need to find out these values? So that now we can add these two values as per the requirement. Okay, so now if I add these two, that is x by p plus y by q, तो फिर क्या मिलेगा मुझे? p square minus 3q square plus q square minus 3p square. So p square minus 3p square, that is minus 2p square minus 2q square. So if I take minus 2 common, so the value of x by p plus y by q is equal to then minus 2 whole into p square plus q square हो जाएगा. ठीक है. वैसे x मतलब कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे प्रोसीड करना है, वो टेक्निक याद रखना है. ठीक है. So since we know the value of x by p plus y by q, which is minus 2 whole into p square plus q square, then यही p square plus q square को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग नीचे लेके आएंगे तो then this will become x by p plus y by q whole thing divided by p square plus q square. This is equal to minus 2. So second option is the correct answer. The value of the expression x by p plus y by q whole thing divided by p square plus q square is minus 2. ठीक है. तो प्रोसीड कैसे करना है वो सब टेक्निक याद रखना पड़ेगा. Since here z to the power 1 by 3 is given and moreover we know the value of z, तो 1 by 3 का तो कोई काम नहीं है. We cannot expand that 1 by 3 or 1 by 2 or 1 by 4. So that is why cubing कर दो both sides so that we can put the value of z as well as we can expand the right hand side by using the formula of a plus b or a minus b whole cube. After that, by seeing the requirement, we can proceed. Since here we need x by p plus y by q, तो इसी तरह x और y को common equate किया, उसके बाद simplify किया. That's it. Okay. So this is one model. Let us discuss the next model. थोड़ा सा मैं अभी geometrical interpretation में चला जाता हूँ. ये सब तो बेसिक्स हो गया जो कि हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया एनसीईआरटी से भी यूज किया. अभी थोड़ा सा मैं जियोमेट्रिकल पार्ट में चला जाता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्टिव में है तो वो है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. थोड़ा सा जियोमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन लाइक आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोकस ऑफ द पॉइंट. द क्वेश्चन इज द लोकस of the point, z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, satisfying modulus z minus twice I divided by z plus twice I is equal to 1 is, look at the options. Here the first option is x-axis, second option is y-axis, third option
Third option is y is equal to 2. And the last option is x is equal to 2. So these are the options given. Look at the question. This is little bit geometrical based question. The locus, already we have discussed about the locus, right? When I have discussed straight line part, in that case I have discussed about the locus. The meaning of locus, you know, even you have solved a few objective questions also. So the locus of the point z equal to x plus iy, ये point का locus क्या होगा वो find out करने के लिए दिया. What is that point here? The point is z. Z is nothing but a complex number. That is why it is represented by x plus iy. So the locus of the point z satisfying this condition is what? Options are given: x-axis, y-axis, x equal to 2 and y is equal to 2. So since z is equal to x plus iy is given, you are asked to find out the locus. Locus means we all know that is the equation of that particular point, right? So put the value of z in this expression. That is x plus iy minus twice I divided by x plus iy plus twice I. This is equal to 1. Alright. It can be written as, now better you do one thing, we can separate the real and imaginary part, that is x plus I into y minus 2 divided by modulus x plus I into y plus 2, which is equal to 1. Alright. Now you do one thing, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से और भी अच्छा हो जाएगा. x plus I into y minus 2, this is equal to modulus x plus I into y plus 2. ठीक है. क्यों यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके गया? ताकि अभी हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे और रूट ओवर को हटाएंगे, बिकॉज मोडुलस है. सो ट्राई टू रिमूव द मोडुलस. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस y minus 2 whole square. This is equal to x square plus y plus 2 whole square. Alright. So यहाँ से हम लोग x square को एलिमिनेट कर सकते हैं. So y minus 2 whole square can be written as y square minus 4y plus 4. This is equal to y square plus 4y plus 4. So 4 will be cancelled. Even we can eliminate y square also. So minus 8y is equal to 0. That means we can write y is equal to 0. So अगर y equal to 0 मिला तो that means we can say that the locus of the point z is x-axis, because y equal to 0 कौन सा एक्सिस में होता है? हमेशा x एक्सिस में ही होता है y equal to 0. Alright. So like this geometrical based questions you have to practice. Although this is a basic question. So in the next class I will discuss little bit standard question. थोड़ा सा भी standard को बढ़ाएंगे objective questions का, complex number का. ठीक है. So this is important part. This complex number, this objective point of view से बहुत important है. ठीक है. So I will continue the same objective part in the next class also. Thank you for today.